हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम सीखेंगे डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी डेली रूटीन को बड़े आराम से इंग्लिश में बोल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आई स्पेंड अबाउट 30 minutes in the park doing exercise and morning walk. After that, I come back my home and rest for some time. Then I take a shower and get ready. I take my breakfast. After that, I go to bus stop to catch a bus. Sometime bus comes late, then I have to wait for it. Thereafter, I catch the bus and reach my college. I study there about 3 hours. Then I go to my friends and we sit together and gossip about various things. Then I go to canteen and enjoy my lunch with my friends. It is the time to come home. I come home by public bus. It is the time to come home. Then I catch a bus to come home. I come home around 3 o'clock. I rest for 30 to 40 minutes. Then I take a cup of tea. After that, I do my homework and thereafter I go to playground. There I play cricket with my friends. In the evening, I come back home and I refresh myself. About 8 o'clock, I take my dinner with my family and we sit together for 30 to 40 minutes. After that, I go to my personal room. There I study for 30 to 40 minutes. After that, I watch my favorite television programs. Sometimes I browse my phone and enjoy the videos on YouTube and social media networks. After that, I go to sleep. इस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन को इंग्लिश में बता सकते हो। आप अपने हिसाब से ज़रूरी बदलाव इसके अंदर कर सकते हो। आई होप दैट कि इस वीडियो ने आपको डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना सिखाया होगा। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।